Okay, beta, welcome back. Let's resume. Yes, sir. Okay, so we just did a X meridian question, the method how to solve the X meridian PL. Now, we wanted to see how is this MZD and TZD appear on a rational horizon diagram. अब बेटा जो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ रैशनल हॉराइजन डायग्राम पे जो हम बना रहे हैं डायग्राम अभी, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये डायग्राम में कैसा दिखेगा। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। लेट मी ओपन अप ए रैशनल हॉराइजन डायग्राम. Okay. Let's say we have a observer in the northern hemisphere, let's say about 30-40 degrees north latitude. So we can have the equinoctial here. The pole will be here. This is where you are going to have the pole. Now you can give me any body of any declination, beta, any declination of your choice. 20 degrees north. Okay, 20 degrees north. So let's make the declination circle of the body. The declination circle of the body would be something like this. The body is going to rise here, then move in the sky in this path. Then it will cross the meridian at this particular point. Then it will go west of the meridian and it will be setting on the western horizon. Okay. Now let's say we are not able to take the sight of the body at the time of Marpas. We calculate the limit of the body. The X meridian limit comes to 30 minutes. So we are taking the X meridian sight now. The body has already passed the meridian and the body is somewhere here. Let's say this is where the body is. Let's call the body as X. Now in this question, the sextant altitude what is given to us is the altitude when the body is at point X. So if I want to show in this diagram, let me join ZX. From the horizon up to X, this is the true altitude of the body. The true altitude. And what will be the true zenith distance? Let me make the true zenith distance also. This will be the true zenith distance of the body, ZX. This is the TZT. So this is what we obtain when we correct the sextant altitude, and 90 minus true altitude is what we obtain. This is the TZT. Now when we put it in the formula, what do we obtain then? When we put it in the formula, we obtain the MZD. Okay. So for understanding purpose, let me change the color again. Let's move to green color. The MZD was this when the body was on the meridian. So this is what the formula gives us. We were not able to take the site at that time. So that is why we were not able to obtain the MZD. So we have obtained the MZD using the formula now. Okay. So this is an overview of the X meridian concept. Okay. But अगर आप इसमें थोड़ा और डीप जाओगे तो और भी डाउट्स आएंगे, which I don't want to go into because that's beyond our present syllabus. So no, I just wanted to see the diagram, so that's it. Okay, all right. Okay. Okay, so let's go back now. We have done the X meridian. अब बेटा प्रैक्टिकली अगर आपको X meridian limit पता करनी हो, as I told you, it will not be required in the question.
in the question, when they tell you the term that the body is close to the meridian or near the meridian, we know that this has to be solved using the x meridian limit. And if you want to calculate the x meridian limit of a particular body, this will be required in another question. In our part C, there is a question star suitable for site. So when we do that question, there the use of these x meridian tables will be required. So these tables are available in the Norris table. There are total 4 x meridian tables which are available. X meridian table 1, which you are seeing right now on the screen. Then we have x meridian table 2, we have x meridian table 3, and we have x meridian table 4. Total 4 tables. In the olden days, when we were not having calculators available to us, we were using all these 4 to solve a x meridian site. Now we have scientific calculators available to us. So for normal calculation, we use those calculators. So nowadays, we require only table number 1 and table number 4. The job of table 2 and table 3 can be done with a scientific calculator. So we do not refer to table 2 and table 3 anymore. We only require table 1 and table 4. These two tables, they give us the x meridian limit of a body. Now, how do we obtain the x meridian limit? You see, we have table 1 open in front of us in this slide. So this table 1 is entered with the latitude of the observer and the declination of the body. So these are the two things with which we enter into the table. Let's say, for example, the declination of the body is 40 degrees and the latitude of the observer is 10 degrees. So if you enter into the table, you move with this latitude and declination, you will reach to a value which is 2.96. This is known as factor A. You can see it is written on top of the table also. We call it as factor A. So we obtain this factor A from x meridian table 1. Once you have this factor A from table 1, now with this you enter into table number 4. So let's go into table number 4 now. This is x meridian table number 4. It's a very small table, almost 1/4 of a page. And we enter into this table using the factor A, which we found out just now from table 1. So you can see here, factor A is mentioned. So we have to enter the table with factor A. Our factor A value was 2.96. So if you see here, the value is increasing 0.7, 1.4, 1.5, 2.4, 2.96. The closest value to this is 3.0. There is a decimal also here, which is not visible. So the nearest value to our factor A is 3.0 here. And against 3.0, you see what they have mentioned here is 32. So this 32, what is this 32? You can see here, this is the maximum interval. Okay, and this interval is in minutes. Okay, it is written on the top of the table also. Minutes of time before or after meridian passage. So it means 32 minutes before Marpas and 32 minutes after Marpas time, X meridian method can be used for this particular body by this particular observer. So remember in your mind that this limit is both before and after. Okay. So this 32 means 32 minutes before Marpas and 32 minutes after Marpas, both plus and minus.
So this is how we obtain the x meridian limit of any particular body. So beta, this table is understood. Any doubt you are having in the table? Okay, great. So we will be using this table when we do our question number 7 of our paper. That will not come in this module, it will come in a later module. So we will be using this table that time to calculate the x meridian limit. Okay. Another important thing which you should be aware of, somebody can ask you, from this table, beta, can you see what is the maximum time interval for the x meridian limit of a body? $71 दिखा रहा है सर, factor 0.7. Yeah, that's right. The maximum time which they have given in this table is 71 minutes. So that's 1 hour and 11 minutes. That is the maximum interval of time a body can be suitable for a x meridian site. So you can be sure that if a body is more than 1 hour and 11 minutes away from your meridian, in any case, you cannot use x meridian method. So just keep it in your mind. Sometimes it is required in the questions. Okay, I will tell you where it is required. Otherwise, also somebody can ask you during orals, what is the maximum time interval for which a body can be suitable for x meridian? So this table immediately gives us a ready reckoner, a ready-made value that it's about 71 minutes. This is an older edition of Norrie's table. In the newer edition, if you see, then the table is slightly modified. They have gone up to 75 minutes, I think, in the new table. So 71 or 75 minutes is the maximum interval of time for which x meridian site can be taken. Okay, beta, this is understood. Any doubts coming to the mind? Okay, very good. So shall we proceed on to our next method, beta? Yes, sir. सर एग्जाम में हम नॉरेज टेबल से जैसे ये इसमें एक एग्जांपल में दिखाया हुआ है रिडक्शन निकाल सकते हैं डायरेक्ट या फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन वाला ही माना जाएगा? बेटा आप अगर कंफर्टेबल हो रिडक्शन के साथ तो निकाल सकते हो, लेकिन उसके दो डिसएडवांटेज हैं. What he is asking is whether we can use table number 2 and table number 3 instead of the scientific calculator. So आप चाहो तो कर सकते हो, बट उसके दो डिसएडवांटेज हैं. नंबर 1, आपकी एक्यूरेसी डाउन चली जाएगी, बिकॉज कैलकुलेटर से आपको ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी अपनी कैलकुलेशन में. एंड नंबर 2 बेटा, आपको टेबल 2 टेबल 3 से जब रिडक्शन निकालोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. So that is why usually I don't recommend using table 2 and table 3 for finding the reduction and then solving the x meridian question. But if you are comfortable with that method and you have been through, so then it's okay, beta. It is not considered wrong. Okay, thank you. Okay. Okay. So let's move on to our next method. This is the fifth and last side solving method which we have. Now, beta, this method is based on Polaris or pole star. Now, this Polaris or pole star is a very special star. What is the speciality of this star?
In the olden days, people used to have this star as a directional reference also, because in whichever direction the star appears, that is basically the north direction. Secondly, this star will immediately give you an idea of what your latitude is. So that's why it was a very, very special star as far as navigation was concerned in the olden days. It used to provide you with your immediate latitude as well as a directional reference. So how do we use this star? Now, the speciality of this star is that this star is very, very, very close to the north celestial pole. Okay. Now, what is the importance of north celestial pole? Let us make a rational horizon diagram, and I will explain it to you there. So in the rational horizon diagram, you have these 5 points always at these locations. In the center, you have the zenith of the observer, and on the top, you have north, at the bottom, south, on the right-hand side, east, and left-hand side, west. So whichever observer you have, whichever body you have, the rational horizon diagram will always have these 5 points at these locations only. Now, after this, we can fit our latitude into this diagram. Once we fit our latitude, we can show the equinoctial and the pole. Now, let's assume our observer is at 30-40 degree north latitude. So that means the zenith is 30-40 degrees north of the equinoctial. So equinoctial has to be 30, 35, 40 degrees south. So this is the equinoctial which we have. And this is point Q, where it cuts the observer's meridian. The pole will be on the other side of the equinoctial. Now, ZQ in this diagram, it represents the latitude of the observer. The pole is on the other side. The pole is north of the observer, and it is represented by P. This is where the pole is. Now, beta, we know that the altitude of the pole or elevation of the pole, which is basically NP, N to P in this diagram. This is also known as altitude of the pole. It is also known as elevation of the pole. And this is always equal to the latitude of the observer. Why is it equal to the latitude? It's very simple to understand. You see, we know pole to equinoctial is 90 degrees. And we also know that zenith to rational horizon. Now, point N is on rational horizon and point Z is the zenith. This also is 90 degrees. Now, if this is also 90 and this is also 90, it immediately tells us that NP has to be equal to ZQ. So immediately you know that this NP, elevation of the pole or altitude of the pole, will be equal to the latitude of the observer. Now, let me erase all the ink now. This means if with any method we are able to observe the north celestial pole in the sky, we are able to see the north celestial pole in the sky. If we take its altitude, then immediately that altitude will give us our latitude. So if you can see the north celestial pole and you take its altitude, you will get your latitude immediately. No formula, no calculation, nothing is required. Now, it would have been best कि अगर भगवान जी यहाँ पोल के ऊपर ही कोई एक फ्लैशिंग रेड लाइट, फ्लैशिंग ग्रीन लाइट, फ्लैशिंग लाइट कोई ऐसी लगा देते तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता. हम उसी लाइट को स्काई में देखते, उसका एल्टीट्यूड लेते और हमें हमारा लैटिट्यूड मिल जाता. तो भगवान जी ने ट्राई किया स्टार लगाने के लिए, बट व्हेन ही वाज पुटिंग द स्टार, वो स्टार एग्जैक्टली पोल पे नहीं लगा, वो पोल से थोड़ा सा साइड में लग गया. नाउ दिस इज वेयर द स्टार इज.
अब अगर ये स्टार बिल्कुल पोल के ऊपर होता फिर तो बहुत आसान काम था, इसी स्टार का एल्टीट्यूड लेते और हमारा लैटिट्यूड स्ट्रेट अवे हमें मिल जाता, बट इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द पोल। ओके, हो सकता है सारे स्टार फिट करते करते थक गए भगवान जी एंड ही वांटेड टू पुट दिस एट द पोल, पर वो टायर्डनेस की वजह से हाथ थोड़ा सा हिल गया, ही वाज नॉट कंप्लाइंग विद द रेस्ट स्टार, so that is why it got fitted close to the pole. So अब अगर ये पोल के पास आ गया है तो अब ये स्टार एक स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं रहेगा, ये तो मूव करेगा। अगर ये बिल्कुल पोल पे होता, द स्टार वुड हैव बीन स्टेशनरी, इट वुड नॉट मूव, बट इट इज slightly away from the pole, so it will be moving now. How will it move? All the bodies move in a circular motion around the pole, तो ये स्टार भी ऐसे मूव करेगा। Now at some point इस स्टार का एल्टीट्यूड पोल के एल्टीट्यूड से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, एंड एट अनदर पॉइंट इस स्टार का एल्टीट्यूड पोल के एल्टीट्यूड से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। सो इफ वी टेक द एल्टीट्यूड ऑफ दिस पोल स्टार और पोलारिस, वी विल गेट our latitude to a very good accuracy, but it will not be exact. Okay, इसमें थोड़ी सी एरर तो आएगी। कितनी एरर आएगी? The error basically depends upon the position of the star in its declination circle. Error could be plus in some case, error could also be minus in some case. तो अगर हमें किसी तरीके से ये डिफरेंस का पता चल जाए या इस एरर का पता चल जाए तो बड़ी इजीली हम पोल स्टार का एल्टीट्यूड लेंगे, उसमें ये एरर अप्लाई करेंगे और हमें हमारा लैटिट्यूड मिल जाएगा। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन द पोलारिस और पोल स्टार ऑब्जर्वेशन मेथड। हम लोग पोलारिस का एल्टीट्यूड ऑब्टेन करते हैं सेक्सटेंट से। ये करेक्शन या जो एरर है ये हमें मिल जाती है। ये कहाँ से मिलती है? इट इज गिवन इन द नॉटिकल एल्मनैक। फॉर एवरी ईयर इट इज गिवन इन द नॉटिकल एल्मनैक अंडर पोलारिस टेबल। तो इस पोलारिस टेबल में हमें ये करेक्शन मिल जाती है। When we apply that correction to the altitude of the pole star, we get our observed latitude. So this is the basis of the Polaris or pole star observation method. So let us now see this table which is provided in the almanac, and it gives us the Polaris correction. ये बेटा टेबल है पोलारिस का। It is given on page number 274 of your almanac. So you can open it up and see it there. So when you look at this table, this is divided into 4 parts. ये मैंने अभी सिर्फ पहला पार्ट आपको यहाँ पे शो किया है। तो दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट, इसके नीचे 3 और पार्ट हैं। अब ये जो पोलारिस का टेबल है, दिस इज एंटर्ड विद LHA एरीज। यू सी, it is entered with LHA areas. हर एक कॉलम जो है ये 10 डिग्री का एक बैंड रिप्रेजेंट करता है, लाइक फ्रॉम 0 to 9 डिग्री 59 मिनट्स। ये पहला कॉलम है। देन बेसिकली यू कैन से 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, that way. So every 10 degree of LHA areas you have a column dedicated. अब ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इससे हमें अपनी करेक्शन का पहला हिस्सा मिलता है। द करेक्शन इज नॉट ए सिंगल करेक्शन, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 components. These components are known as A0. You can see this A0 mentioned here. The second component is A1. The third component is A2. सबसे ऊपर वाले पार्ट से हमें मिलता है A0, उसके नीचे A1, उसके नीचे A2। ये 3 करेक्शंस हमें मिलती हैं और ये तीनों की तीनों पॉजिटिव करेक्शन है। So let us say we calculate the LHA areas and it comes to 55 degrees. So you enter into 50-60 column. You see first one is 50 degrees, and the second value is 51 degrees, okay, 52 degrees, 53, 54,
and 55. So for 55 degrees, you see the A0 correction is 0 degrees, 15.3 minutes. Okay, that's how you obtain the A0 correction. So topmost part से हमें A0 correction मिली. Let's go to the lower part now. इसके नीचे चलते हैं. ये हम second part में आ गए table के. This gives us the A1 correction. Now for A1 correction, you have to enter with your DR latitude. So you have the latitude mentioned here. Whatever your latitude is, you enter with that latitude in the same column. It gives you the A1 correction. Now for 30 degree latitude, it is 0.6 minutes. So A1 correction हमें मिल गई. Let's go still further. ये है third part table का. This gives you A2 correction. Same column में enter करेंगे हम 55 degree के लिए, and we enter with the month of the year. Let us say February. So for February, you see the correction is 0.8 minutes. ये है A2 correction. So table से तीनों corrections हमें मिली. All these three corrections are positive correction plus correction. इसी टेबल के और नीचे अगर हम चले जाएं तो लास्ट पार्ट में हमें मिलता है एजीमुथ ऑफ द पोल स्टार, एजीमुथ ऑफ पोलारिस. तो पोलारिस एजीमुथ इज नेवर कैलकुलेटेड. एबीसी मेथड नहीं लगाते हैं इस पे हम. पोलारिस मेथड, पोलारिस एजीमुथ इज स्ट्रेट अवे पिक्ड अप फ्रॉम द टेबल. तो सेम कॉलम में आपने एंटर किया 50 to 60 कॉलम में, एंड विद योर लैटिट्यूड. ओके, so whatever your latitude is, with your latitude, if it is 30 degree, you enter here and you can interpolate. See, for 20 and 40 both, it is 359.7. So this is the azimuth of Polaris. So once you get all these three, if you look at the bottom of the table, you will see the notes. In the notes, it is mentioned all these three corrections are to be added. Okay, A0, A1, A2. And at the end, 1 degree is to be subtracted. Okay, so anyone has the almanac open, beta? Yes, sir. Okay, so ये तीनों corrections किस चीज पे लगानी है बेटा हमने? Just see there in the formula. So ये true altitude पे लगाएंगे. Very good बेटा. Table में क्या mentioned है? टेबल में सर apparent altitude लिखा हुआ. Latitude is equal to apparent altitude minus 1 degree plus A0 plus A1 plus A2. Okay, तो तुमने true क्यों बोला? टेबल में तो apparent लिखा है. ना apparent altitude में, लेकिन ब्रैकेट में वो भी लिखा हुआ है corrected for refraction. Very good बेटा. So just see in this azimuth, in this table, you will see the formula at the bottom. The formula says apparent altitude bracket में है corrected for refraction plus A0 plus A1 plus A2 minus 1 degree. So Polaris is a star. The only correction in the three total correction values which is applicable to a star is refraction. Star will not have any semi-diameter, star will not have any parallax. So when you apply the refraction correction, it gets converted into the true altitude. So always remember, these three corrections are to be applied to the true altitude of Polaris. So get the true altitude of Polaris, add these three, A0, A1 and A2, and subtract 1 degree in the end, and you will get the observed latitude. This is how we refer to the table. So let me show you the method now, Polaris method. Beta, any doubt coming in the table, Polaris table? Yes, sir. बोलो बेटा. सर ये A1 वाला जो कॉलम है, Okay, A1 column, yeah, this is the one. इसमें सर अगर 90 डिग्री और 99 वाले में अगर आप आएंगे, 90, 99, okay. इसमें सर 20 और 30 लैटिट्यूड की वैल्यू 0.4.5 है. Yeah, that's right. 25 होगा लैटिट्यूड तो कितनी लेंगे सर? ओके बेटा, आप इनमें अगर वैल्यू चेंज होती है, यू हैव टू मैनुअली इंटरपोलेट. तो अगर बिल्कुल मिडल की वैल्यू आ जाती है, लेट अस से इट कम्स एट 25,
तो एक्चुअली ये बनेगा 0.45. Now when you round it off, so 0.45 value will be rounded off to 0.5. Okay. 0.5 को सर नेक्स्ट में ले जाएंगे. हाँ बेटा, 5 को हम लोग हमेशा नेक्स्ट में ले जाते हैं. Whenever you get a exactly middle value, you take it to the next figure. ठीक है सर. ओके, थैंक यू. ओके ओके. और कोई डाउट आ रहा है बेटा टेबल में, पोलारिस टेबल? Okay, very good. So we have seen the table. Now let's see the Polaris method, how we will do it. We have already discussed it. Let me show you now. The information which will be provided to us is date and time. Either they'll give you GMT or as a rare case chronometer with AM/PM indication. They will give you the sextant altitude of pole star or Polaris. They'll give you the index error and height of eye, and they will give you the DR position also. So first step is the same. We enter into the we enter into the almanac, find out the value of GHA Aries first, apply our longitude and get LHA Aries. This is what we require to enter into the table. Now we correct the altitude. So you correct it for index error, tip correction, you get the apparent altitude. You correct it for total correction or refraction. In the case of star, the total correction consists of refraction only. You get the true altitude. You apply A0 correction, A1 correction, and A2 correction. All three are plus. And in the end, you subtract 1 degree. You will get the observed latitude. Now, be careful. This observed latitude is not our fixed latitude. The PL is not the latitude itself. PL हमें पता चलेगी बेटा इसके एजिमुथ से. तो ये फॉर्मूले से हमें ऑब्जर्व लैटिट्यूड मिला है. PL के लिए we need to find the azimuth using the bottom part of Polaris table, and our PL will be perpendicular to the azimuth of the pole star. Okay, so the diagram for Polaris will be exactly the same as we did for X meridian. Okay, like this. You have the observed latitude, you have the DR longitude, you will draw the azimuth of the pole star here at this reference position, and perpendicular to it will be your position line or line of position. The PL is not the observed lat, PL is passing from the observed latitude and is perpendicular to the azimuth of the pole star. Now, as a special case बेटा ऐसा possible है कि पोलारिस का जो एजीमुथ है वो exactly 000.0 आ जाए. If it happens that way, that the Polaris azimuth is exactly not 000.0, not even 0.1, not even 359.9, when it is exactly 000.0, in that case, the observed latitude will become your fixed latitude. Let me show you in the table. If you see in the azimuth table, beta, whenever LHA Aries is between 30 to 40, you see the azimuth of the pole star is exactly 0.0. Okay, this happens at a later value also. I have only shown it up to 120. I think 210 or somewhere, 210 to 220 somewhere, you will again have the azimuth 000. So can you check beta which LHA range it is 0 again? So 210 to 290. Okay. So 210 to 220 or 219.59. ये जो दो ranges हैं, 30 to 40 range and 210 to 220 range. In these ranges, the azimuth exactly becomes 0.0. So if the LHA falls between two ranges, these two ranges, in that case,
you will straight away have your observed latitude as your fixed latitude. Otherwise, this will give you a PL which will be perpendicular to the azimuth and not a fixed lat. So because this was the Polaris method, the pole star method. So is it clear to all now? Any doubt coming in this method, beta? नहीं ये सर ये 210 to 220 का क्या बोला था आपने उसमें? Beta, you have the almanac with you? Yes, I have. उसमें वो latitude का जो azimuth 0 डिग्री दिखा रहा है उस रो में ना. Right. So I was saying कि अगर आपका LHA 210 to 220 रेंज में आ जाता है तो आपका azimuth जो है ये 0.0 हो जाएगा. Yes, sir. In that case, the PL will be exactly east-west और जो observed lat आपको मिला है वो आपका fixed latitude भी बन जाएगा. It's like कि मरपास पे हो जाएगा. That's right, beta. That's right. It is like as if the pole star is on your meridian. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay, बेटा. तो अब बेटा ये पांचों के पांचों जो साइड सॉल्विंग मेथड हमने रिवाइज और रिफ्रेश किए हैं, अब आपने इन पांचों मेथड्स को प्रैक्टिस करना है. सो प्लीज प्रैक्टिस दीज मेथड्स एट योर एंड. अब एक और चीज माइंड में आती है. व्हेन यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, समटाइम्स यू फील कि भाई यही सवाल तो हमने प्रीसी में भी किए थे और यही सवाल हमने सेकेंड मेड में भी किए थे, अब यही सवाल हमें फेज 1 में भी करने हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉल्विंग देम अगेन एंड अगेन? पर्पस है इनका बेटा और बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस है. अगर ये रिक्वायर्ड नहीं होता तो मैं आपको इसे करने के लिए भी नहीं बोलता, बिकॉज आई बिलीव इन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम इन द इजीएस्ट पॉसिबल मेथड, ताकि आप कम से कम टाइम इन्वेस्ट करके अपने आप को एग्जाम पासिंग की कंडीशन में पहुंचा सको. नाउ द रीजन व्हाई प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में नंबर 5, नंबर 6 इन दोनों क्वेश्चन के अंडर आता है ये जो टॉपिक है. एंड हमारी जो प्रेपरेशन है पेपर में ये ऐसी होनी चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमें आता है, इट शुड बी 100% कि हम ये क्वेश्चन का राइट आंसर विद इन द रिक्वायर्ड टाइम. एक सवाल करने के लिए बेटा आपने अंदाजा लगाया हमें कितना टाइम मिलता है फेज 1 नेविगेशन पर? ओके, सो यू हैव 20 मिनट्स. अब ये जो साइड सॉल्विंग का क्वेश्चन आएगा, ये साइड सॉल्विंग के क्वेश्चन में दो पार्ट्स होते हैं. ओके, आई शोड यू द एग्जाम फॉर्मेट आल्सो एंड देयर आई टोल्ड यू दैट इट इज इन 2 पार्ट्स. सो दे मे गिव यू वन लॉन्ग बाय क्रोन, अनदर इंटरसेप्ट, वन मरपास, अनदर पोलारिस, लाइक दैट. तो एक साइड को वर्कआउट करने के लिए आपको कितना टाइम मिला? सर अगर 3 आ गई साइड्स तो 21-7 मिनट एक साइड के लिए. हाँ, यूजुअली 2 आती हैं बेटा. यू विल नॉट हैव 3 इन ए सिंगल क्वेश्चन, यू विल हैव 2. 2 आ गई तो 10 मिनट, 10 से 11. तो आपको 10 मिनट मिलते हैं. अप्रोक्सीमेटली अबाउट 10 मिनट्स इज व्हाट यू गेट. ओके, इफ यू रिमेंबर ए लिटिल बिट, आपने सेकंड मेट में जब ये साइड सॉल्विंग की थी, डू यू रिमेंबर हाउ मच टाइम डिड यू गेट देयर? 30 मिनट. यस, 30 मिनट्स. आपको एक लॉन्ग बाय क्रोन सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं और आप अगर उसे सही कर लो तो नंबर कितने मिलते हैं? 35 मार्क्स. 30 मिनट 35 मार्क एक लॉन्ग बाय क्रोन को सॉल्व करने के लिए. और जब आप फेज 1 में आते हो तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलते हैं 10 मिनट. 10 मिनट का मतलब है द टाइम इज 1/3 नाउ. फॉर द सेम क्वेश्चन द टाइम इज 1/3. दैट्स नंबर 1. और गलत बात है. हाँ बेटा, यही मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत गलत बात है और बिल्कुल सही तुमने नोटिस किया, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है. और ये डिस्क्रिमिनेशन है सर.
अपने माइंड को तुमने अच्छे से बता देना है कि जब तक फेज 1 नेविगेशन पास नहीं हो जाता गलत बातें हमारे साथ होती रहेंगी और हमें इन्हीं गलत बातों में से अपना रास्ता निकालना है। ओके, अच्छा अभी और भी गलत बातें आएंगी आगे। सेकंड थिंग देखो, ये फ्लो में नहीं होता ना सर। सेकंड मेट के बाद हम लोग अगर फ्लो में कर जाए तब तो प्रैक्टिस में रहते हैं, इतने सालों बाद लगते हैं दोबारा, तो इसलिए गलत बात है। अगर फ्लो में होता तो कर भी देते हैं। राइट बेटा, ये एक इशू है ऐसा जो हर एक प्रैक्टिकल फील्ड में होता है। अब अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे होते या डॉक्टर होते तो एक ही बार में पढ़ाई खत्म हो जाती। अभी तो फिर फेज 2 में आओगे, फिर ASM में आओगे। ओके, तो एनीवे कमिंग बैक टू दिस, सेकेंड मेड में आधे घंटे में आपने जब किया तो आपको 35 नंबर मिले। यहाँ पे जब आप करोगे तो कितने नंबर मिलेंगे आपको? 12.5 नंबर। तो देखो मार्क्स भी 1/3 हो गए, टाइम भी 1/3 और मार्क्स भी 1/3 इफ यू डू दिस क्वेश्चन करेक्टली। तो अगर आप इसको कंबाइन करो दोनों डिफिकल्टी लेवल, एज फार एज मार्क्स आर कंसर्न, मार्क्स 1/3 हो गए, तो पासिंग बिकम 3 टाइम्स डिफिकल्ट। अगर आप टाइम को कंसिडर करो, टाइम भी 1/3 हो गया, सो इट बिकम्स 3 टाइम डिफिकल्ट। और अगर इनको कंबाइन करो तो कॉम्बिनेशन में बेटा जब दो डिफिकल्टी लेवल अटैच होते हैं ना तो ऐड नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं। So 3 into 3, it's 9 times more difficult to do this question as compared to what you did in second mate. तो second mates में आप देखो आपको कितना एफर्ट लगा था उसे पास करने के लिए। The effort which is now required or the proficiency which is now required is 9 times more. Okay? तो फेज 1 एग्जाम में बैठने से पहले ये मेथड ऐसे आपको आने चाहिए। आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इन पांचों में से कोई भी साइड सॉल्विंग का मेथड आया तो 10 मिनट और 100% राइट आंसर ये मेरी आंसर शीट पे होना चाहिए। अगर इतना कॉन्फिडेंस आपके माइंड में नहीं है बिफोर यू सिट इन द एग्जाम, यू आर नॉट सिंपली प्रिपेयर्ड फॉर फेज 1। अब ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? तरीका एक ही है बेटा, प्रैक्टिस। ओके, मेथड सिंपल है, मेथड में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वी हैव बीन डूइंग दीज मेथड्स टाइम एंड अगेन, लेकिन एंश्योर करने का कि हम इसको सही करें और विद इन गिवन टाइम फ्रेम में करें इज ओनली वन वे, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी है कि इन क्वेश्चंस में गारंटी हो जाए कि नंबर 1 आंसर सही होगा, गलत नहीं होंगे, एंड नंबर 2 कि इतने गिवन टाइम फ्रेम में हो जाएंगे, 10 मिनट में एक साइड का सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो दिस शुड बी द टारगेट व्हेन यू आर डूइंग दीज क्वेश्चन। टारगेट शुड नॉट बी, आपका माइंड क्या टारगेट देता है आपको? आपका माइंड आपको एक बड़ा सिंपल टारगेट देता है। माइंड बोलता है कि यार ये लॉन्ग बाइक्रोन का मेथड है, ये देखो फॉर्मूला मैंने लिखा है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे तो एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ेंगे तो याद ही रहेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं याद करने की, बस ये फॉर्मूला देखना है, एल्मनैक से वैल्यूज निकालनी है और सॉल्व करना है। अगर आंसर मैच हो गया, आई एम प्रोफिशिएंट। आपका माइंड यहाँ छोड़ देता है। लेकिन अगर आप यहीं पर रुक गए तो फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं होने वाला बेटा, वहाँ जाके अटक जाएगा माइंड। तो दैट इज वाई प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने ये पांचों मेथड जो है ये प्रैक्टिस करने हैं ओवर द वीकेंड। नवंबर बैच विल बी गोइंग फॉर एग्जाम्स टुमारो, तो दिसंबर बैच, जनवरी बैच, प्लीज प्रैक्टिस देम वेल। एंड नेक्स्ट वीक में जो फिर हमारा अगला नेविगेशन का सेशन होगा उसमें मैं आपको प्लॉटिंग जो है ये टॉपिक शुरू करा दूंगा। तो वी विल सी कि जो ये पीएल्स हमने निकाली हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, हाउ डू वी यूज देम फॉर फिक्सिंग आवर पोजीशन। दैट इज द प्लान गोइंग। बोलो बेटा। सर जो ये मेरिडियन बाय लैटिट्यूड वाले में स्टार्स वाला जो है उसमें सर जीएमटी फॉर मेरिडियन पैसेज ऑफ स्टार निकालना होता है, राइट, क्वेश्चन में पूछ रखा है, उसकी सर टाइम एम्बिग्यूटी कैसे सोल्व करनी है? ओके बेटा, नॉर्मली हमारे पास टाइम का क्वेश्चन फेज 1 लेवल में आता नहीं है, दे कंसिडर इट बिलो योर लेवल। बट अगर कभी आ जाए तो इसे निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं हम इसे? देखो, जब भी कोई बॉडी हमारे मेरिडियन पे होगी तो उस बॉडी का LHA कितना होगा बेटा, लोकल आर एंगल? 360।
इट विल बी 0 और 360। तो आप इसी चीज के साथ अपना टाइम निकालते हो। कैसे निकालते हैं? वी कीप द LHA इक्वल टू 0 और 360। नाउ LHA इज इक्वल टू GHA प्लस माइनस लॉन्जिट्यूड। तो हम बॉडी का GHA वहां से निकाल लेते हैं और हम एल्मनैक में एंटर करते हैं। नॉर्मली एल्मनैक में जब हम जाते हैं तो हम टाइम से GHA देखते हैं। जब ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे तो GHA से एंटर करेंगे और टाइम को वापस देखेंगे। तो दिस इज द मेथड विच वी फॉलो। आपको इसमें कोई डाउट आया बेटा इस मेथड को करते हुए? आई कैन रिजॉल्व दैट डाउट। सर यहाँ तक तो हो गया था, वो जीएमटी निकल गया था, बट उसमें बाद में कई बार टाइम एम्बिग्यूटी आती है कि बोला कि एक दिन पीछे वाली डेट लेनी है, आगे वाली डेट लेनी है। ओके, वो आती है बेटा डेट एम्बिग्यूटी। डेट में एम्बिग्यूटी आती है, उसका रीजन मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैंने आपको एक स्टेटमेंट पीपीटी में दिखाई थी। द डेट गिवन इन द क्वेश्चन इज ऑलवेज विच डेट? जो वहाँ पे लोकल उस दिन की तारीख है। राइट, द डेट गिवन इन द क्वेश्चन इज ऑलवेज द LMT डेट। अब ऐसे सवालों में आपको लेट अस से उन्होंने LMT डेट दे दी 5 फरवरी। ऑन 5 फरवरी फाइंड द मरपास टाइम ऑफ दिस बॉडी। आपने LHA इक्वल टू 0 रखा, आपके पास एक GHA की वैल्यू आ गई। आप उस GHA के साथ एल्मनैक में एंटर कर गए। अब आप एल्मनैक में कौन से डे में एंटर करोगे? अगर 5th डे क्वेश्चन में पूछा है तो उसी डे में एंटर करोगे, राइट? अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो 5th डे उन्होंने दिया है वो तो है लोकल डेट, और एल्मनैक में जो डेट लिख रखी है वो है GMT डेट। तो इन दोनों में एक दिन का डिफरेंस हो सकता है। इट इज पॉसिबल कि GMT डेट में और आपकी लोकल डेट में एक दिन का डिफरेंस हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले तो उसी डे में आप एंटर कर जाओ। यू डोंट नो वेदर इट शुड बी 1 डे बिफोर और 1 डे लेटर। तो आप उसी 5th डे में एंटर कर जाओ, आप अपना टाइम निकाल लो। आपका हमारे पास टाइम आ गया। अब ये जो टाइम आया, दिस इज GMT टाइम। आप इसमें अपना लॉन्जिट्यूड इन टाइम अप्लाई करके LMT टाइम निकालो। जैसे ही आप LMT टाइम निकालोगे, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि LMT की डेट चेंज हो रही है या सेम है। अगर LMT की डेट सेम रहती है, 5th ही रहती है, फिर तो आपका आंसर परफेक्ट करेक्ट है। लेकिन अगर आपकी LMT की डेट आगे चली जाती है, LMT की डेट हो गई 6, या पीछे चली जाती, LMT की डेट हो गई 4, क्वेश्चन में डेट दे रखी थी 5, तो अब आपको पता चल गया कि जो मैंने 5th में एंटर किया था उससे मेरी LMT की डेट मैच नहीं हो रही। तो अगर डेट एक दिन आगे जा रही है, यू री एंटर इनटू द एल्मनैक 1 डे बिफोर। अगर डेट पीछे जा रही है, यू री एंटर इनटू द एल्मनैक 1 डे लेटर। दिस इज हाउ वी रिजॉल्व द डेट एम्बिग्यूटी। ये क्वेश्चन बेटा एक सॉल्व एग्जांपल उन्होंने बुक में दे रखी है, बिफोर द प्लैनेट्स एंड स्टार्स एक्सरसाइजेस। तो आप वो सॉल्व एग्जांपल को करके देख सकते हो। इट शुड इमीडिएटली कम टू योर माइंड हाउ इट इज टू बी डन। एक्चुअली सर मैंने एक क्वेश्चन नंबर 5 किया था जिसमें बैक एंगल का कांसेप्ट भी है, तो उसमें जो आंसर आया बाकी सब कुछ मैच हो रहा है। उसमें 4 आवर्स 26 मिनट्स 45 सेकंड दिया है और मेरा आंसर आ रहा है 4:30:41। ओके, द आंसर इज नॉट मैचिंग, राइट? यस सर, बाकी सब कुछ सेम है, MZD भी सेम है, ऑब्जर्व लैटिट्यूड भी सेम है, सब कुछ सेम है सर। ओके, बेटा विच क्वेश्चन इज दिस? क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11। ओके, बेटा बाकी को भी इस क्वेश्चन को करके देखो। तो देयर आर 2 possibilities. One, the answer may be wrong. The second is सर मैंने भी किया था, मेरे को भी आंसर में प्रॉब्लम आ रही थी सर। okay, what is your answer coming, beta? Is it matching with the सर answer? इससे हम देखना पड़ेगा। Okay, just share your answer over the group so that everybody can match it. Then you know that the answer in the book is not. आंसर क्या रहा था तेरा भाई इसका? 4:30:41।
Okay, so just match it with each other. अगर आपके भी आंसर मैच नहीं होंगे, then just send the solution to me on WhatsApp. Okay, sir. Okay, बेटा. Okay, so we close out this section here, बेटा. आज का टॉपिक हमारा complete है. Please practice these and all the best to November batch for your exam tomorrow. Thank you, sir. Okay, beta. Thank you and see you in the next class.